Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are doing well. Today we will be discussing about solar system. So in the previous video we talked about constellations, and we told that constellation, the definition of constellation. We told that the star forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. Okay, so this was about constellation, and we talk about some constellations like Ursa Major, like Orion, which also called Ursa Major is also called the Great Bear, and we talk about Orion, and another two constellations are Leo Major and Cassiopeia. Okay, Cassiopeia. Let me talk about Cassiopeia now. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. You can spot it in the northern sky, and it is visible during the winter in the early part of the night. So you can spot it in the during the winter and in the early part of the night. So it looks like a distorted letter W or M. You can see here. It looks like the distorted letter W here. As you can see, it is a distorted letter W, or you can also think it as a M. So this is Cassiopeia. So let's move forward and talk about the solar system now. Okay, so let's now talk about the solar system. So what is solar system? You have heard about it, and you may have also studied about in the earlier classes, in the 7th class or in the 6th class, and earlier classes too. So the solar system, the sun and the celestial bodies which revolve around it form a solar system. Okay, so इसमें एक sun होता है, और इस sun के around ये celestial bodies revolve करते हैं. Okay, ये sun के around revolve करते हैं. But जिस तरह से हमने ये सोचा है कि एक तो sun है and these 8 planets, ये solar system है हमारा. But it also consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteoroids. इसमें ये सारे जो है bodies भी हैं. Planets हैं, okay, comets हैं, asteroid हैं and meteors हैं. तो ये the gravitational attraction between the sun and all these objects keep them revolving around it. तो कैसे revolve करते हैं around the sun? It is because of gravitational attraction. तो ये gravitational attraction की वजह से possible है कि planets revolve करते हैं around the sun. So let me talk about now something about comets, asteroids and meteors. This is our solar system. Okay, this is our solar system, and these 8 planets all are revolving around the sun. But as I told you that this solar system does not consist only in these 8 planets. It also contains asteroids, meteors and comets. You can see here this image, and this is a comet. Okay, this is a comet which I was talking about. The comet, it's a body of ice. Okay, body of ice, rock and dust. So it's a body of ice, rock and dust, and this can be several miles in diameter.
Okay, so it's a larger body than asteroid and meteoroid. So it can be several in diameter, and it also orbits around the sun. So this also orbits around the sun. Okay, and this one is a meteoroid. Okay, this meteoroid is much smaller rock. As you can see here, its size is very small. So it's a much smaller rock, or it can be some particle, and it also orbits around the sun. And this one is asteroid. Okay, and this asteroid is an object which is larger than meteoroid, so it's larger than this, and it also orbits around the sun. Okay, and it's made up of rocks. Either it can be rock, or it can be something metal. Okay, so it's made up of rocks and or metals. There could be a question in your mind. That question may be that is sun also revolving around something? क्या सन भी रिवॉल्व करता है या सन स्टैटिक है, एक ही जगह है? ये जो है रिवॉल्व नहीं करता, मूव नहीं करता. तो the answer of this question is that sun also revolves, and it revolves around the Milky Way. Okay, it revolves around the Milky Way, and Milky Way जो है ये एक जो है गैलेक्सी है, यानी कि जो गैलेक्सी हमारा विच इज़ नियरर गैलेक्सी टू अस, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है, ये जो नियरर गैलेक्सी है हमारी, दिस इज़ मिल्की वे. सो द सन रिवॉल्व्स अराउंड दिस मिल्की वे. बट ये मिल्की वे इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है जिसमें करोड़ों अरबों और खरबों के स्टार्स हैं. तो अगर ये सन जो है if it revolves around this Milky Way, it will take 230 million years to complete one revolution around the Milky Way. Okay, ये तो constantly revolve करती ही है इस Milky Way के around, but it will take about 230 million years to revolve to complete one revolution around the Milky Way. आप ज़रा इमेजिन करिए कि ये मिल्की वे जो है कितनी ज़्यादा जो है बड़ी है. एंड यहाँ पे मैं भूल गया कि इसकी स्पीड कितनी है. हमारे इस सन की स्पीड इट इज़ 828,000 किलोमीटर पर आवर. ओके, यानी कि 8,28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जो सन है ये मूव कर रही है. सो यू कैन imagine how big our Milky Way galaxy is. So let's talk about some members of the solar system. First one is the sun. Okay, as I told you that sun also revolves around the Milky Way, around the Milky Way galaxy. The sun is the nearest star from us. It's a star. Okay, just like I have told you that the difference between the star and the planet. Planet does not have its own light, and star have its own light. So and it is also a nearest star to us. It's a nearest star to us, and it is continuously emitting huge amounts of heat and light. As we are observing it, हम observe करते हैं कि कैसे ये जो स्टार हैं, सन हमारा कैसे lit up करता है इन planets को, और जिसमें हमारा अर्थ भी आता है. Okay, so this continuously emits a large amount of heat and light,
एंड द सन इज सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जैसे आपको पता है कि जो सन है इसी की वजह से अर्थ पे लाइफ है। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, तो वो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So if sunlight is not there, the planets will not make their food. So we cannot also survive, क्योंकि प्लांट्स पे सारा कुछ डिपेंड है। तो अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे हम भी सरवाइव नहीं कर सकते। सो द सन इज़ द काज फॉर आवर लाइफ आल्सो। तो सन की वजह से हमारी लाइफ भी है। तो खाली ये अर्थ पे ही हीट एंड लाइट जो है अपनी एमिट नहीं करता, बल्कि सारे प्लैनेट्स जो हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, सभी 8 प्लैनेट्स, तो उन पे इसी की लाइट होती है, सन की लाइट। ओके, नाउ प्लैनेट्स। सो व्हाट आर प्लैनेट्स? Planets look like stars, but they do not have light of their own. Okay, वो जो planets हैं वो reflected light जो है उनकी होती है। That is the light of sun. Sun पे जब उस पे light पड़ती है and that light gets reflected back from the sun. And how can you distinguish between a planet and a star? प्लैनेट और स्टार के दरमियान डिस्टिंग्विश आप कैसे करेंगे? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम सन इज दैट स्टार्स ट्विंकल। जो भी आप स्काई में ट्विंकलिंग करते देखोगे, दैट इज स्टार। ओके, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स ट्विंकल करते हैं एंड प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। एंड प्लैनेट्स जो हैं planets keep changing their positions. Planets of जो है पोजीशन उनकी चेंज होती है, यानी कि सुबह उनकी एक पोजीशन होगी और शाम को उनकी दूसरी पोजीशन होगी। ओके, एंड ये जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। स्टार्स हमें अपीयर नहीं होते अपनी पोजीशन चेंज करते हुए। And planet has a definite path in which it revolves around the sun. Planet का एक definite path होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि planet का अपना path होता है। जैसे यहाँ पे जुपिटर का अपना path है, ओके, एंड यूरेनस का अपना path है। ये वाला जो राउंड है इसके अराउंड, तो सो दिस इज़ वन इट्स ओन path। एंड अर्थ का अपना path है, मरकरी का अपना path है, वीनस का अपना path है। तो इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी जिसके अराउंड ये प्लैनेट्स मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो सन के अराउंड उनका एक अपना पाथ होता है, अपना एक रास्ता होता है। तो उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एन ऑर्बिट। So we say that the planets revolve around in the orbit. Planets revolve in the orbit around the sun. So the time taken by planet to complete one revolution is called its period of revolution. तो एक revolution जब वो complete करता है sun के around, okay, एक revolution for example हमारे अर्थ ले लो, जब अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो दैट रेवोल्यूशन विल बी दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, तो उसको हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे जब एक रेवोल्यूशन एक प्लैनेट जो है कंप्लीट करेगा। सो ये जो पीरियड है, ओके, दिस पीरियड इंक्रीजेस। The period of revolution increases as the distance of the planet decreases from the sun. यानी कि मरकरी का सबसे कम पीरियड होगा, क्योंकि मरकरी का पाथ जो है ऑर्बिट जो है कम होगा। और उसके बाद वीनस है, ओके, ये जो वीनस है यहाँ पे, तो वीनस का थोड़ा सा बड़ा
ऑर्बिट होगा मरकरी से, क्योंकि ये सन से दूर है। इसी तरह से मार्स का थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके। मार्स का थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये वीनस से थोड़ा दूर है। इसी तरह अर्थ का उससे बड़ा होगा, ओके। इस तरह से जितना ये जो है दूर जाएंगे सन से प्लैनेट्स, उतना जो है उसका ऑर्बिट बढ़ जाएगा और उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बढ़ जाएगा।